Okay, so I think okay, so we are like half an hour. Um okay, so at least expect कि okay, how many of you know what is LinkedIn? आप अपने पुराने हैंड्स लोअर करके okay, मैं कर देती हूँ. Okay. How many of you at least know that LinkedIn है क्या? Please raise your hand. Okay, this is interesting. Um, ओके सो सबसे पहले तो मैं ब्रॉडली सबसे स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि लिंक्डइन इज नॉट ओनली फॉर बिगनर्स या फिर जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं. लिंक्डइन एक बहुत बड़ा सोशल नेटवर्क है, बहुत बड़ी कम्युनिटी के लिए, जिसमें प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स सब आ जाते हैं. ठीक है. और हम जो हैं यानी कि अभी लाइक बिगनर्स अपने करियर के अर्ली स्टेज पे या फिर स्टूडेंट्स, वी आर ओनली लाइक हम सबसे लाइक वी आर जस्ट वन ऑफ द कैटेगरीज जिसमें हम फिट होते हैं. So what is LinkedIn and how can I use it? LinkedIn is the world's largest professional network on internet. So आज के सेशन के लिए I'll be comparing LinkedIn with respect to Facebook. Just क्योंकि Facebook I'm sure every like हम सबको पता है कि Facebook क्या है. ठीक है. तो फर्क ये है कि दिस इज मोर लाइक प्रोफेशनल. आप यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आपको हर किस्म का कंटेंट मिल जाएगा. And this helps you to be productive in terms of your professional career. ठीक है. So productivity हर किस्म की हो सकती है, लेकिन whatever you are doing in your respective fields, be that even graphic designing, dancing or singing or whatever, LinkedIn आपकी मदद करेगा to connect with right kind of people or right kind of opportunities. Uh, सबसे पहले तो the reason like I am biggest advocate of brand ambassador of LinkedIn because of course मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली हैं थ्रू लिंक्डइन. और मैंने बहुत ज़्यादा फायदा उठाया है. एंड आई वांट द सेम फॉर पीपल बैक होम कि वो लोग भी इस जो कि एक फ्रीली अवेलेबल टूल है, जो कि बहुत आसान टूल है. आपको एक बार बहुत अच्छा प्रोफाइल बना देना है एंड देन थिंग्स विल कम टू यू रादर देन आपको कुछ ढूंढना पड़े. ओके. सो हम इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं? लिंक्डइन, यू कैन यूज लिंक्डइन टू फाइंड राइट जॉब, इंटर्नशिप्स, connect, strengthen your professional relationship, and learn the skills you need to succeed in a career. Okay, and then learning. LinkedIn has its own entire learning. जैसे Coursera है, edX है, तो LinkedIn का अपना एक courses or like the very short courses. When I say short, it means they're just like 1 hour or 1 घंटे में आपको at least basic understanding आ जाती है. But that thing is the career wala, I mean, the learning wala part is through your university or it's paid, but then it's again one of the features of LinkedIn. A complete LinkedIn profile. So this is important, and we'll discuss in detail कि किस तरीके से एक complete और अच्छा LinkedIn profile बनाना है. लेकिन that's later part of today's session. अभी हम ये डिस्कस करेंगे उसके फायदे क्या हैं और क्यों हमें as students, as professionals, as researchers, क्यों we should be active on this. Okay. So a complete LinkedIn profile can help you connect with opportunities by showcasing your unique professional story. कोशिश ये होगी कि आज स्टोरी टेलिंग के बारे में भी थोड़ी सी बात होगी, क्योंकि लिंक्डइन इज नॉट जस्ट योर सीवी कि आपने किसी को भेज दी और दे गेट टू डिसाइड इन लाइक 10 seconds के they're going to move on with your document or not. लिंक्डइन एक अपॉर्चुनिटी है अपनी कहानी बताने की, क्योंकि because it's there's text content into it. You can like आपको पूरा प्रोफाइल आप as a person नजर आते हो when you look at somebody's LinkedIn, and you can like quickly judge from. अब देखिए हम फेसबुक पे अगर हम सोशल कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, हमें अगर किसी नए बंदे से हमारी मुलाकात होती है, व्हाट्स द फर्स्ट थिंग मे बी लाइक कुछ साल पहले तक हम जो करते थे,
We go to Facebook and we see कि okay ये बंदा या ये बंदी इस चीजों को पसंद करता है, इस चीजों को उसके शेयर हैं, यानी कि इसका माइंडसेट ऐसे होगा. फॉर एग्जांपल उसके कुछ पॉलिटिकल व्यूज होंगे, कुछ रिलीजियस व्यूज होंगे, तो instantly from their Facebook profile we would judge that person. So similarly, but for the professional context, जब डेवलप वर्ल्ड में हम किसी से मिलते हैं, and then we quickly go to their LinkedIn, we see कि इन वो किस किस्म की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, क्या उसके इंटरेस्ट हैं, और like we can get to see कितना उसका experience and all that, so we can judge, I mean we can know that कि वो बंदा बंदी किस किस्म का है. So this helps you to tell your story. And then finally, you can also use LinkedIn to organize events, announce jobs, get jobs, write articles, and so on. In today's session, we'll discuss about what is basically the LinkedIn, to understand the importance of storytelling and storytelling through LinkedIn for your career growth and building a strong and complete LinkedIn profile. I'll stop for 1 minute here. अगर किसी को कोई भी question है, they can raise their hand, and I'll allow them to unmute themselves. Okay. और अगर even बीच में भी किसी को कोई question है, तो they can stop me. मैं तो भी अगर कोई technical issues आते हैं तो please do let me know. Okay. ओके. बात हो रही थी स्टोरी टेलिंग की और अपनी कहानी बताने की. तो स्टीव जॉब्स कहते हैं, द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड इज द स्टोरी टेलर. The storyteller sets the vision, values, and agenda of the entire generation that is to come. यानी कि देखिए, फॉर एग्जाम्पल आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आपके साथ 80-90 और स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन लेट्स से उनमें से 50% एक्टिव हैं इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज या फिर इन ऐसे कॉम्पिटिशन्स ऑन ग्लोबल लेवल और वॉट एवर, ठीक है, लेकिन इन अ क्लास व्हेन यू आर सिटिंग अमंग 80 पीपल, मुझे नहीं पता अगर मैं एज अ टीचर आती हूँ या फिर मैं एज अ रिक्रूटर आती हूँ एट द एंड ऑफ योर बैचलर्स डिग्री, मुझे नहीं पता कि आप 4 सालों में किस किस्म की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, अनलेस यू टेल मी. और 4 सालों में हो सकता है कि आफ्टर योर ग्रेजुएशन, लाइक आप अगर मास्टर सेट कर लो तो 6 सालों तक आप इवन भूल जाएंगे कि आप 6 सालों में किस किस्म की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे. यस नुमान. नुमान, आपका कोई क्वेश्चन है? नुमान, नुमान. आप क्वेश्चन या तो Q&A में डाल दें ताकि हम लोग रीड कर लें, या तो आप माइक पे बता दें, अपना माइक ऑन करके. हमें आवाज नहीं आ रही तो आप चैट कोई Q&A में डाल दें ताकि फिर हम उसको कंटिन्यू. ओके. सो टेलिंग योर स्टोरी इज रियली इम्पोर्टेंट. जब तक आप अपनी कहानी खुद नहीं बताएंगे, सुनने वाले को नहीं पता चलेगा कि व्हाट्स योर बैकग्राउंड, व्हाट्स योर स्टोरी, एंड लाइक आप जो 80 लोग बाकी बैठे हुए हैं, 79 लोग बैठे हैं, आप उनके जैसे ही लगेंगे जब तक आप आगे आके अपनी कहानी नहीं बताते. लिंक्डइन एक अपॉर्चुनिटी देता है टू रिकॉर्ड योर स्टोरी थ्रू योर पोस्ट, थ्रू योर फीचर्ड पोस्ट, थ्रू योर हाईलाइट्स, थ्रू टेलिंग योर समरी. क्योंकि देखें, सीवी डजंट रियली गिव यू दैट अपॉर्चुनिटी कि आप उसमें, मतलब सीवी के लिए तो खैर एक अलग ये हमें एक घंटा चाहिए कि व्हाट शुड बी अ गुड सीवी, लेकिन इन अ वेरी नटशेल मैं ये कहूंगी कि a CV should never be more than 1 page. Never, never, never. क्योंकि रिक्रूटर ने या फिर रीडर ऑफ योर सीवी जो भी जहाँ पे बैठा है, दे डोंट रियली हैव टाइम मोर देन 5-10 seconds टू डिसाइड कि आगे उसको आपकी सीवी पढ़नी है या नहीं पढ़नी है. And if it's going to be more than 1 page or more than 2 pages, they're never going to read it. Unless आप कोई president of USA हैं, like you have 20 pages of CV or even 3 pages of CV, कोई भी आपकी CV नहीं पढ़ने वाला if it's beyond 2 pages. तो आप डेफिनेटली 1 पेज के अंदर अपनी सारी कहानियां तो नहीं लिख सकते, लेकिन
लिंक्डइन गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी कि आपने एक चीज रखी हुई है और आप अपने लिंक्डइन का जो लिंक होता है या फिर जो आपका यूजर नेम है वो आप अपनी सीवी में लिख दें। एंड लाइक ऑलवेज इट्स अंडरस्टैंडेबल कि अगर वो ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे दे गो टू योर लिंक्डइन एंड देन दे विल सी कि व्हाट हैव यू बीन डूइंग। ओके, सो स्टोरी टेलिंग किस तरीके से जो आपका लाइक इन दिस केस आपका जो रिक्रूटर होगा या फिर इन जनरली किस तरीके से उनको इम्पैक्ट करता है, हम उस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। Okay. जब हम किसी को एक कहानी बताते हैं एज कम्पेयर टू हम सिर्फ अपनी जो है सीवी दिखा रहे हैं, इन दो चीजों के बीच में मैं कंपेयर करूंगी। सीवी देखते वक्त दे जस्ट लुक एट यू एज एज एन अदर पर्सन। वो उसमें आपकी क्योंकि आपकी कहानी का जिक्र नहीं हो रहा, दे डोंट रियली गेट टू सी कि ये बंदा किस जो है किस बैकग्राउंड से आता है और इसने क्या क्या फेस किया होगा, ये किन चीजों से गुजर के जो है यहाँ तक पहुंचा होगा। इट्स जस्ट वन पेज डॉक्यूमेंट जो कि नंबर्स और ईयर्स और आपकी जीपीए बताता है, द सीवी। एंड लाइक जो रीडर यहाँ पर रिक्रूटर है दे डोंट रियली गेट टू कनेक्ट, उसको आपकी कहानी नजर नहीं आती है। तभी आपने लाइक नोट किया होगा कि लाइक अगर आप में से किसी ने कोई भी इंटरव्यूज दिए होंगे, बी दैट फॉर एनी स्कॉलरशिप और एनीथिंग, फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स इज देयर एनीवन जिसने कभी कोई इंटरव्यू दिया हो? नोमान, इसी पे हम बात करेंगे। प्लीज रेज योर हैंड जिसने कभी भी कोई भी इंटरव्यू दिया हो। मैजबीन, आपने कोई इंटरव्यू दिया है? जी मैंने बहुत सारे दिए हैं। पहले सवाल क्या पूछते हैं इंटरव्यू में? uh, what's your qualifications that are या mostly that are not mentioned, or what are your skills that are not mentioned in your CV or something like this. Then they move towards my topic, like I am an architect, so they move forward for the discussion of different topics related to architecture. ओके। मोस्टली इंटरव्यूज में जो सवाल होता है, सबसे पहला सवाल लाइक जब अभी आप रूम में एंटर होते हैं और सेटल इन हो रहे होते हैं, दे आस्क यू के ओके टेल अस अबाउट योरसेल्फ। मतलब जब मैंने अपने कैरियर के शुरू शुरू स्टेजेस में इंटरव्यू की प्रिपरेशन करती थी, यहाँ पर जब मैं इंटरव्यू देती थी, आई वाज लाइक ये किस किस्म का सवाल है? आपने ऑफ कोर्स मेरा सीवी देख के, मेरा प्रोफाइल देख के मुझे यहाँ बुलाया है, लाइक व्हाई आर यू आस्किंग मी नाउ कि टेल अस अबाउट योरसेल्फ? और um, or like sometimes they would say कि tell us about yourself in 1 minute, and I would be like कि मैंने बहुत कुछ किया है ना, लाइक आई एम हियर नाउ। मैंने मतलब ऑफ कोर्स कि अगर मैं अपनी आई स्टार्ट टेलिंग अबाउट माई सेल्फ कि मैंने नर्सरी कहाँ से किया, केजी कहाँ से किया, तो वो 1 मिनट से तो बहुत बड़ी कहानी हो जाती है पहली बार। और मैं किस तरीके से अपने आप को रिफ्लेक्ट करूं विद इन दिस टाइम फ्रेम? नुमान के सवाल का जवाब देंगे। नुमान, हम अभी फिक्शनल नॉन फिक्शनल स्टोरी टेलिंग के ऊपर नहीं जा रहे, हम स्टोरी टेलिंग की स्किल के ऊपर बात कर रहे हैं कि किस तरीके से अपनी कहानी बतानी है। मकसद ये है कि हमने अब ऐसे इमेजिन करें कि मैं बस यही कह रही हूँ आपसे कि अपनी सीवी को जो है ना थोड़े उससे फूल वूल लगा के बहुत खूबसूरत तरीके से बताना है। क्योंकि देखें, आपने बहुत कुछ अचीव किया होगा अपनी लाइफ में और उसके बैकग्राउंड में बहुत कुछ होगा, ठीक है? तो सीवी पे सिर्फ फ्रंट नजर आता है, लेकिन लिंक्डइन वो आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आपको एक कहानी बतानी है। दैट डजंट मीन कि आपको अपने यूट्यूब वीडियोस बैठ के बनाने हैं टू टेल योर स्टोरी, बट लेकिन आपको अपना प्रोफाइल इस तरीके से क्राफ्ट करना है, इस तरीके से बनाना है, इट टेल्स द रीडर कि लाइक ओके व्हेन दे हैव डन इट, दे हैव डन इट थ्रू लाइक a significant amount of hard work and genuine passion and interest। क्योंकि उससे ये होगा कि जो आपका लिसनर होगा या फिर जो भी बंदा आपका प्रोफाइल देख रहा होगा, दे गेट टू कनेक्ट विथ यू। और हालांकि हम अभी लिंक्डइन के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन दिस इक्वली अप्लाइज जब आपके इंटरव्यूज होते हैं, ठीक है? सो जस्ट
इंटरव्यूज में नेवर से वेल आई, मैं भी खुद शुरू में यही करती थी कि ओके मैंने 2013 में इंजीनियरिंग की, उसके बाद मैंने 2017 में मास्टर्स किया। वो लोग ये नहीं सुनना चाहते। उन लोगों को ये पता है क्योंकि उन लोगों ने आपके प्रोफाइल में ये देखा एंड देन उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे बुलाया। वो उसके पीछे की कहानी सुनना चाहते हैं कि मी बीइंग लाइक one of the like only women engineer in an electrical engineer class, 80 लड़कों के साथ बैठ के मैंने जब 4 साल की इंजीनियरिंग की तो मुझे कैसा लगा था, what was my experience, why did I choose to do engineering, that's my story. And like, trust me, when I tell this story, uh, like which is true, which is real, which is hard to do engineering as a woman in a boys of 80 class, I get more opportunities, and there's nothing wrong in doing that. So similarly, for example, मेरी मुश्किलात अलग थी और like the things that I go went through वो अलग थी। आपकी कहानी कुछ और होगी। आपकी कहानी होगी कि आप शायद अपने like अगेन मैं दिस इज समथिंग जो कि हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सच भी होता है कि हम अपने गांव से अपनी फैमिली से पहले इंजीनियर डॉक्टर बन रहे होते हैं, लेकिन क्राफ्ट योर स्टोरी ब्यूटिफुली। मूविंग ऑन। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो ओके। इन योर एसओपीज, एसओपीज से मेरा मतलब है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, इन योर इंटरव्यूज, इन एनी काइंड ऑफ एसेज, कवर लेटर्स, एज अ रिक्रूटर क्या देख रहा होता है, दे वांट टू सी कि आपका जो पास्ट है और आप जो करंटली कर रहे हैं प्रेजेंट, और आपके जो फ्यूचर गोल्स एंड एम्बिशंस हैं वो किस तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है। तो लेट्स से कि हम भले अपने किसी भी तरीके से हम अपना प्रोफाइल रिप्रेजेंट कर रहे हैं टुवर्ड्स द रिक्रूटर, टुवर्ड्स anybody who is going to read and profile for opportunity, for a job, for whatever, वो आपकी पूरी कहानी सुनना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जब हम मूवी देखते हैं, उसमें भी क्या होता है कि मतलब पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड बताते हैं, फिर देन प्रेजेंट में वो मूवी चल रही होती है, एंड देन एट द एंड वो आपको फ्यूचर के लिए एक विजन दे देते हैं, ओके नाउ हैप्पी एंडिंग और अब इस तरीके से होगा। ठीक है, क्योंकि सी व्हेन वी टॉकिंग अबाउट स्टोरी टेलिंग, इट्स नॉट जस्ट आपने एक डॉक्यूमेंट लिख लिया बैचलर्स 2016 मास्टर्स 2018 फ्रॉम मेहरान यूनिवर्सिटी और वट एवर। नो, यू हैव टू टेल योर स्टोरी कि मैंने फॉर एग्जांपल बैचलर्स किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, एंड देन मुझे लगा कि इसी में मुझे मास्टर्स नहीं करना चाहिए, देन आई चोज एनर्जी सिस्टम्स क्योंकि मुझे मेरे जो भी रीजंस थे मुझे ब्रॉडन करना था, एंड देन फॉर माय पीएचडी आई वेंट ऑन टू डू दिस। या फिर मैंने प्री मेडिकल किया, लेकिन मुझे फिर शायद लगा कि मेडिकल इज नॉट द राइट थिंग फॉर मी, देन आई चोज टू डू लाइक इंजीनियरिंग। सी, be truthful. Like there's no harm in telling the right story, because अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, इट मीन्स यू हैव वर्कड हार्ड और आप आगे भी हार्ड वर्क करना चाहते हैं। तो अपनी सही कहानी बताएं और उसको खूबसूरत बना के बताएं। लाइक व्हेन यू सेल दैट, यू विल बी अ ब्रांड, एंड देन लाइक आपको जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। When you have a good complete LinkedIn profile, like or in general, like when you think your content, opportunities आपकी तरफ खुद आएंगे, you don't need to look for those, like, and that has happened to me, to my colleagues, to my friends जिनका मुझे पता है कि जिनका at least अगर LinkedIn profile up to date होता है and like they are active on LinkedIn, they get opportunities at the door and they get to decide कि हमें इस opportunity को yes करना है या no करना है। And trust me, that feeling is amazing. तो सिमिलरली इसी तरीके से हम जो है अपना जो बनाते हैं स्टोरी का जो 3 पार्ट्स होते हैं, सेटअप, कन्फ्रंटेशन एंड देन रिजोल्यूशन, और इस सारे का जो सेंटर पॉइंट होता है दैट्स यू। आपने कभी देखा है किसी मूवी में या फिर किसी ड्रामा में जब पहला एपिसोड होता है या फिर शुरू हो रही होती है मूवी, तो सारा जो अटेंशन होता है वो उस कैरेक्टर के ऊपर होता है। ठीक है, उस कैरेक्टर के दे शो यू के हाउ लाइक दे वॉक, हाउ दे स्पीक, किस तरीके का उसका
कपड़े पहनने का स्टाइल है, दे शो एवरीथिंग अबाउट द कैरेक्टर बिफोर बिल्डिंग अप द स्टोरी अराउंड दैट कैरेक्टर, जो भी उसका हीरो या हीरोइन होती है. So similarly, you are the hero or heroine of your story, and like you have to pay a lot of attention on all of your details कि किस तरीके से आप बाहरी दुनिया को नजर आते हैं. Okay, once you understand the importance of making a good complete profile on LinkedIn, then let me tell you, in this world of when we are living in 2024, algorithm, अगर आपको चप्पल चाहिए तो फेसबुक पे आपको चप्पल का ऐड आ जाता है. ठीक है. um, that's like sad reality, but that's true. जो है यही है. रूमी का एक कोल है ना, what you seek is seeking you. This applies for like 2020, the age of 2024. आपके जिस तरीके की इंटरेस्ट होंगे वही सिमिलर चीजें आपको, लाइक आपने देखा ना फेसबुक पे आपकी फीड किस तरीके से चेंज होती है. अगर आप आज पाकिस्तान इलेक्शंस के वीडियोस देखना स्टार्ट करते हैं तो आपको अगले 10 दिनों तक इलेक्शन की वीडियोस आएंगे. लाइक से यू लुक फॉर अ चप्पल ऑन फेसबुक तो आपको चप्पलों के ही ऐड आएंगे. सो सेम अप्लाइज ऑन लिंक्डइन. अगर मेरा इंटरेस्ट है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड तो मेरे पास क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ही अपॉर्चुनिटीज आएंगी जो मुझे शो होगा मेरे टाइमलाइन पे. और मेरे पास जो, ओके, नॉट जस्ट द अपॉर्चुनिटीज बट जो मेरे पास लोग नजर आएंगे वो भी वही नजर आएंगे इन माई नेटवर्क, या फिर बिल्ड माई नेटवर्क में कि जिनका कनेक्शन क्लाइमेट चेंज से होगा. और जो क्लाइमेट फीचर स्टोरीज होंगी, जो क्लाइमेट की न्यूज लेटर्स होंगे, जो क्लाइमेट रिलेटेड न्यूज होंगी, सारा मेरा जो सर्किल होगा मुझे अराउंड वही नजर आएगा क्योंकि अल्गोरिथम हेल्प्स मी डू दैट. सो नाउ इमेजिन कि आपको एक जॉब ढूंढना है. ठीक है. एंड लिंक्डइन जस्ट नोज दैट आप एक जॉब ढूंढ रहे हैं. लिंक्डइन आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा टू हेल्प यू फाइंड द राइट जॉब. जब मैं ये कहती हूँ कि हेल्प यू फाइंड द राइट जॉब, अगेन मैं यही बात रिपीट करूंगी दैट यू हैव टन्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड देन आप डिसाइड करेंगे कि आपको एंग्रो में जाना है या फिर के इलेक्ट्रिक में जाना है. आप खुद डिसाइड करेंगे. बट लेकिन फॉर दैट ऑफ कोर्स देन देयर आर प्रॉपर चैनल्स एंड सो ऑन एंड सो ऑन. लेकिन सबसे पहले जो अपॉर्चुनिटी का पता चलेगा वो आपको पता चलेगा. LinkedIn is getting very common. Like it's not कि ये सिर्फ डेवलप्ड दुनिया की बात कर रही हूँ मैं. पाकिस्तान में भी जो MNCs हैं या फिर जो अच्छे रिप्यूटेबल इदारे हैं, दे आर मेकिंग यूज ऑफ LinkedIn. Because in fact, me as like co-founder of Climate Action Pakistan, मैंने पिछले हफ्ते एक जॉब पोस्ट की थी ऑन LinkedIn. लास्ट ईयर मैंने वही जॉब पोस्ट फेसबुक पे डाली थी. आई हार्डली गॉट लाइक 40 applications. लेकिन through LinkedIn, I've got like more than 200 applications. And like now it's difficult for me कि मैं किस तरीके से इन बहुत अच्छी 200 प्रोफाइल्स को जो है बैठ के जज करूँ. सी लाइक मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैंने have to like hire through LinkedIn. So this helped me. Or like trust me, on Facebook it was really frustrating क्योंकि हर चीज मुझे मैनुअली करनी थी. But on LinkedIn it's too easy for me and like to make the results and everything. It just helps me and it has quickened my process. तो अगर मतलब मेरे लिए भी LinkedIn आसान था, not only because I'm advocating about it, but genuinely it was, और मैं बहुत पछता रही हूँ कि मैंने ये बहुत पहले से क्यों नहीं स्टार्ट किया. So if you're on the right track, it helps you a lot. Okay, so this is कि एक अच्छा प्रोफाइल किस तरीके से नजर आता है. I don't have any political affiliations. This is just a good example of a good LinkedIn uh, like profile because इस किस्म से आपको नजर आता है कि किस तरीके से मतलब आपका प्रोफाइल, फॉर एग्जांपल आप अपना प्रोफाइल इमेजिन कर सकते हैं यहाँ पे. तो इसमें काफी सारी चीजें हैं. आपका सबसे पहले तो आपकी प्रोफाइल पिक्चर है which should be decent enough and like nice and smiling and it should not be funky. और उसके बाद आपकी लिंक्डइन हेडलाइन आ जाती है, यानी कि आप किन चीज़ों के बारे में, लाइक व्हाट आर योर कॉजेज. फॉर एग्जांपल इफ यू आर एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर तो लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स PCBs or whatever you do um, in your career. And then cover picture. So cover picture से एक और एड ऑन है जो कि आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि टू रिफ्लेक्ट
कि like what do you belong to. For example, in case of this profile, Mr. Imran Khan का जो cause है इमरान खान कैंसर अपील, that is वो उनकी कवर पिक्चर पे है। अब हमें राइट पे नजर आ रहा है कि इमरान खान जो है नीचे मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यानी कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से पढ़े हैं, ऊपर हमें उनकी कैंसर अपील यानी कि डेथ वो उनके वर्क प्लेस है। लाइक सिर्फ इस चीज को देख के मुझे नजर, और कितनी नीटली ये बना हुआ है प्रोफाइल, इसको देख के मैं जज कर सकती हूँ कि ओके ये बंदा है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है और अभी ये कैंसर के उस पर काम कर रहा है इन पाकिस्तान। एंड देन उसके लाइक दीज आर द थिंग्स पाकिस्तान हॉस्पिटल्स उसके बारे में इसके इंटरेस्ट हैं। और अगर इसके 41K जो है फॉलोअर्स हैं, इट मीन्स कि ये कोई लेजिट बंदा है। एंड देन आई सी कि मेरे म्यूचुअल कनेक्शंस कौन से हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान सॉरी जिस तरीके से फेसबुक में म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं। ओके मेरे तो 5 म्यूचुअल जो है कनेक्शंस हैं, इट मीन्स कि अगर मैं इनको रिक्वेस्ट भेजूंगी जो कि शायद कनेक्टेड है, दैट्स व्हाई इट शोज मी मैसेज। तो दे विल सी कि हम जो है कनेक्शन कनेक्टेड है। अच्छा, लिंक्डइन में एक और मजे की चीज होती है कि इट शोज यू योर फर्स्ट कनेक्शंस, योर सेकंड कनेक्शंस एंड योर थर्ड कनेक्शंस। अगर आप में से कोई उसी ने रिसर्च की हो तो आपको कनेक्टेड पेपर्स की आपने एक वेबसाइट देखी तो उसमें ये होता है कि सेंटर में फॉर एग्जांपल आप हैं तो फर्स्ट कनेक्शंस यानी कि जिनसे आप डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, सेकंड कनेक्शंस यानी कि वो लोग जो आपके कनेक्शन से कनेक्टेड हैं, एंड देन थर्ड कनेक्शंस जो कि आपके जो सेकंड कनेक्शंस थे उनसे कनेक्शन। सो इट kind of gives you like जब आप used to हो जाओगे LinkedIn के, it gives you more understanding and help to get to connected with the right kind of people. Before we okay, so that was important and so on about the LinkedIn. Before we start actually about how to build a good profile, किसी को कोई question हो तो please. Okay, in a good LinkedIn profile, your आपकी प्रोफाइल पिक्चर सबसे ज्यादा मैटर करती है, बिकॉज दैट्स समथिंग जो कि मुझे सबसे पहले नजर आएगी। लाइक इस वक्त तो ऑन योर राइट यू कैन सी के एक पूरा प्रोफाइल खुला हुआ है, लेकिन जब पूरा नहीं भी खुला हुआ होता और सिर्फ हम अमंग सारे लिस्ट ऑफ पीपल देख रहे होते हैं, आपकी प्रोफाइल पिक्चर हमें सबसे पहले नजर आती है। दैट वुड हेल्प मी डिसाइड कि मुझे ये प्रोफाइल खोलना भी है या नहीं खोलना। लाइक और फॉर एग्जांपल इफ आई अप्लाई फॉर अ जॉब, if you have a good profile picture, they're 14 times more likely to be viewed if you have a photo. Okay, yeah. And then like some कुछ लोग क्या करते हैं अपना फोटो रखते ही नहीं है, that's too bad. I mean for LinkedIn, not for the CV. CV के लिए अलग रूल्स हैं। अगर लिंक्डइन पे आपका प्रोफाइल फोटो है ही नहीं, दैट गिव्स वेरी बैड reflection of like why not, and then it starts questions, so like you don't want to give that opportunity to anyone. These are some examples of कि किस तरीके से एक गुड प्रोफाइल फोटो होना सकता है। डिसेंट बैकग्राउंड, you should be smiling at least with your eyes if not completely, थोड़ा सा प्रोफेशनल लुकिंग होना चाहिए, एंड लाइक यू शुड लुक अप्रोचिंग। ऐसे नहीं कि आपने मुंह बनाया हुआ हो प्रोफाइल पिक्चर में और ऐसा लगे कि इस बंदे के साथ तो बात भी नहीं कर सकते हम। And then a smile, because this is like okay, it's professional and all, but like smiling is okay. And like most of the like profile pictures you see, you can एनालाइज कि आपके जो फॉर एग्जांपल मेरे जो मेंटर्स हैं उनकी प्रोफाइल पिक्चर उन्होंने किस तरीके से लगाई, क्योंकि उन्होंने कुछ सोच समझ के ही लगाई होगी। यस, हमारे पास एक महरीन या फिर किसी का हाथ था, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज रेज योर हैंड। And the second thing, which in a LinkedIn profile is important, write an attention grabbing headline. अच्छा, headline तो I would say it's much much more important. Headline आपको opportunity देती है to like it's very small number of words or letters. It gives you opportunity to tell everything about yourself. Okay, for example, मेरे पास ये मेहरान यूनिवर्सिटी के जो है ऑप्शंस कनेक्शंस शो होते हैं कि ये लोग आपके कनेक्शन में नहीं है लेकिन दे कुड बी इन कनेक्शन। ओके, अब मुझे क्या नजर आ रहा है, मतलब क्योंकि मैं जब तक किसी के प्रोफाइल में जाऊं तो मुझे इतना ही उसकी विंडो नजर आती है जिसमें सिर्फ आपकी प्रोफाइल पिक्चर मुझे नजर आ रही है, ठीक है।
मुझे नाम नजर आ रहा है और ये मुझे हेडलाइन नजर आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर मोहसिन अली जामरो की मुझे प्रोफाइल पिक्चर नजर आ रही है। ओके, इट सीम्स फाइन, डिसेंट, लाइक वी आर नॉट जजिंग देयर प्रोफाइल, बट लाइक जस्ट फॉर एग्जाम्पल। एंड देन उनका नाम है जो कि सही लिखा हुआ है। और ओके, कल मैं कुछ प्रोफाइल देख रही थी फॉर प्रिपरेशन फॉर दिस। कुछ नाम थे जो कि इवन उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल में भी नहीं था। इट वॉज गिविंग मी वेरी बैड आइडिया अबाउट द प्रोफाइल कि अपने प्रोफाइल के साथ कोई इतना इन सीरियस कैसे हो सकता है कि अपना नाम भी सही नहीं लिखा हुआ। ओके, सो दिस इज काइंड ऑफ गिविंग मी द आइडिया। देन हेडलाइन। अच्छा, हेडलाइन में अब आप खुद देख लें कि जो एक कटी हुई हेडलाइन है, फॉर एग्जांपल 3 डॉट्स देख रहे हैं, उस पर कुछ मकसद नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल माजिद बलोच ने लिखा हुआ है कि मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ। अब हेडलाइन में मेहरान यूनिवर्सिटी के लिखने की शायद जरूरत नहीं थी, और वैसे ही वो कट गया है तो मैं उसको पढ़ भी नहीं पा रही हूँ। एज कम्पेयर टू दैट अगर हम ये सादुल्ला कलवर का प्रोफाइल देखते हैं तो उन्होंने बिल्कुल नीटली लिखा हुआ है अपनी हेडलाइन में, पीएचडी टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर। अब मुझे बहुत आइडिया हो गया, अच्छा कि भाई वो इंजीनियर है, टेलीकॉम इंजीनियर है, और उन्होंने फिर आगे उसमें पीएचडी भी की। सो वेल, हाउ एवर यू वॉन्ट टू डू इट, दैट्स योर प्रॉब्लम। या फिर हम दूसरे एग्जाम्पल्स देख रहे हैं यहाँ पे, सीनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ऑयल एंड गैस, यहाँ पे पावर बीआई स्पेशलिस्ट। This is the only opportunity to to get someone to like view your profile at least. उसके बाद वो connect करते हैं या नहीं करते हैं, that's like their thing. Draft a professional summary or about. Okay. LinkedIn के अंदर आपका हेडलाइन हो गया, द थिंग्स यू टॉक अबाउट, बिकॉज लाइक यू नो, अगेन बैक टू द स्टोरी टेलिंग, बैक टू लोग आपको देख के, आपका रिक्रूटर आपको प्रोफाइल के देख के जज करेगा। सो दीज आर स्मॉल स्मॉल अपॉर्चुनिटीज। आपका लाइक नाम तो आपका नाम ही रहेगा, लेकिन आपकी हेडलाइन, आप व्हाट यू टॉक अबाउट, दोज आर योर अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्रेस योर इंटरेस्ट। उसके बाद आती है समरी या फिर अबाउट। दिस इज योर ह्यूज अपॉर्चुनिटी टू लाइक 40 वर्ड्स में या फिर लाइक 50 वर्ड्स में, 100 वर्ड्स में आप अपना पूरा पूरा कुछ बता सकते हैं। ठीक है, ओके, बट अगेन शुड बी नॉट बी कि वो इतना लंबा हो, या फिर रीडर को जो है वो सी मोर करके जाना, बिकॉज लाइक ट्रस्ट मी, नोबडी हैज टाइम कि वो आपका सी मोर करके आपके मेहरान यूनिवर्सिटी का पूरा नाम पढ़ने के लिए जो है उसको सी मोर करे। कीप इट शॉर्ट, कीप इट कंसाइज, और जो भी आपको अपने बारे में बताना है, this is your huge opportunity. How does my profile, my summary look like? So this is my summary. Okay. And this is something I've recently updated, like a couple of months back. अब मेरे प्रोफाइल के अंदर मैंने समरी के अंदर मैंने लिखा हुआ है कि एज ए रिसर्चर एट मराई, जो भी पूरा नाम है, बिकॉज आई थॉट दिस वाज इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस नाम लिखने से मेरा एनर्जी, क्लाइमेट, मरीन रिसर्च, उसमें से मेरे इंटरेस्ट रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई द नेम वाज इम्पोर्टेंट। बट एसएफआई या फिर मराई, क्योंकि वो शॉर्ट फॉर्म्स है तो मैंने उनका फुल फॉर्म नहीं लिखा, बिकॉज आई हैव टू ग्रैब द अटेंशन टू द कीवर्ड्स जो कि है एनर्जी, क्लाइमेट एंड मरीन रिसर्च। आई एम वर्किंग ऑन इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट दैट एक्सप्लोर्स ईटीसी। ठीक है, अभी मैंने इसमें ये भी बता दिया कि मैं क्या एज ए रिसर्चर काम कर रही हूँ, कहाँ पे काम कर रही हूँ, ये भी हो गया, उसके कीवर्ड्स भी हो गए, और आगे मैंने अपनी प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन भी बता दी कि मैं किस चीज के ऊपर काम कर रही हूँ। अब जो लोग इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे, दे वुड अप्रोच मी, दे वुड गिव मी अपॉर्चुनिटीज एंड दे वुड टॉक टू मी। अब जो सेकंड थिंग है, मैंने टू क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि वो मेरे ऊपर वाले प्रोजेक्ट से बहुत डिफरेंट एक कैटेगरी है। ठीक है, तो मैंने नहीं, मुझे नहीं समझ आया कि मैं इन दोनों चीजों को कैसे जो है इकट्ठा कर लूं, तो मैंने एक सेकंड पॉइंट बनाई कि आई एम पैशनेट अबाउट साइंस कम्युनिकेशन एंड आउटरीच, एंड आई यूज वेरियस प्लेटफॉर्म्स टू शेयर माई नॉलेज एंड insights with diverse audience. I'm proficient in English, Urdu, and Sindhi, and have skills in finance, nationally determined contribution, and so on. अब क्योंकि ये साइंस कम्युनिकेशन या फिर वॉट एवर आई डू थ्रू क्लाइमेट एक्शन पाकिस्तान, क्योंकि वो एक सिग्निफिकेंट पार्ट है मेरा लिंक्डइन के ऊपर, मैं उसको अपने रिसर्चर की जॉब प्रोफाइल के साथ नहीं मर्ज कर सकती, बिकॉज दिस इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट कैटेगरी। तो इस तरीके से, वेल, दिस इज, आई एम नॉट सेइंग कि कोई परफेक्ट एग्जांपल है, लेकिन आई वाज जस्ट शेयरिंग माय एग्जांपल। नेक्स्ट ऑन डिटेल योर पास्ट वर्क एक्सपीरियंस। ओके, काफी लोग क्या करते हैं, इवन इन योर सीवी दे वुड जस्ट राइट, मतलब आप ये नीचे वाला सारा पार्ट भूल जाएं, सॉरी,
और सिर्फ लिखते हैं कि भाई हमने फलां कंपनी में जो है काम किया एज अ रिसर्चर या फिर एज अ वॉट एवर, ये हमारी डेट्स थी। दे डोंट राइट दिस डिटेल, दे डोंट गिव दीज लिंक। ओके, जब तक आप अपनी, अगेन, जब तक आप अपनी कहानी नहीं बताएंगे कि एज अ स्ट्रेटेजिक रिक्रूटमेंट प्रोडक्ट कंसल्टेंट एट लिंक्डइन वॉट एवर, आपने किस तरीके से उस कंपनी की हेल्प की, आपकी अचीवमेंट्स क्या थी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू नो कि आपने ठीक है काम किया होगा, लेकिन आपने उस कंपनी में एक्चुअली अचीव क्या किया। आई वांट टू नो दैट। जब आप वहां पे थे फॉर एग्जांपल 1 ईयर और 4 मंथ्स के लिए, हाउ हाउ वर यू परफॉर्मिंग, आपके जो एक्चुअल आउटकम्स थे, मैं उनके बारे में जानना चाहती हूँ। एंड वेल, दिस रूल applies on the CV as well, but then like in CV you have very short window and short number of words to do that. यहाँ पे आपको एक बड़ी विंडो मिल जाती है, लिंक्स लगाने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक फेलोशिप की थी, तो उस फेलोशिप का मैंने नाम लिखा, मैंने टाइम लिखा, ऑर्गेनाइजेशन लिखी, एंड देन आई रोट द होल डिटेल अबाउट इट कि मैंने एक ग्रुप प्रोजेक्ट किया था और किस तरीके से हमने उस पर रिसर्च की और ये वो। और उसके नीचे मैंने 3 लिंक्स लगा दी हैं जो कि मेरी आउटपुट थे फ्रॉम दैट फेलोशिप। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि एक 3 महीने की फेलोशिप जो कि मई टू सितंबर तक चली, उसको मैंने थोड़ा सा बेहतर करने की और अपनी कहानी बताने की कोशिश की, और उसमें से मैं अपना 3-4 आउटपुट्स दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि 3 महीने की समर फेलोशिप से आई कुड डू दिस। तो अब जो रिक्रूटर होगा, फॉर एग्जाम्पल एज ए रिक्रूटर, हम इस प्रोफाइल को देखते हैं। ओके, सबसे पहले बात तो शायद डिस्क्रिप्शन थोड़ा ज्यादा ही लंबा हो गया है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट दे वुड सी कि ओके, ये बंदी जो है 4-5 महीने के उसमें, शी कैन गिव मी 3 आउटपुट्स, so it seems nice and all, to like let's connect. Well, see, मैंने खुद को एक नेगेटिव फीडबैक भी दे दिया कि इट लुक्स लाइक बहुत ज्यादा ही लंबा हो गया शायद डिस्क्रिप्शन, लेकिन सॉरी, पॉजिटिव फीडबैक भी है कि डिटेल भी है और आउटकम्स भी हैं। उसके अलावा लिंक्डइन गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू add your skills and get endorsement. स्किल्स यानी कि फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हम एग्जांपल में देख सकते हैं रिक्रूटिंग, टैलेंट एक्विजिशन, टैलेंट मैनेजमेंट, और उसके आपने स्किल लिख दी है, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर आप इंडोर्समेंट भी, मतलब उसके लिए भी आप कर सकते हैं। इंडोर्समेंट क्या होता है? इंडोर्समेंट इज के फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया कि मेरे राइटिंग स्किल्स अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन मेरे कहने पे ये बात कोई क्यों मानेगा? अब जो मेरा प्रीवियस रिक्रूटर होगा, वो मेरी स्किल को इंडोर्स करेगा, यानी कि वो कहेगा कि यस, लाला रूप के राइटिंग स्किल्स अच्छे हैं। तो इसको कहते हैं इंडोर्समेंट। और अगर मेरे एक से ज्यादा इंडोर्समेंट होंगे, यानी कि जो मेरे पूरे मतलब सारे पुराने लोग जिनके साथ मैंने काम किया, और वो सारे लोग लिंक्डइन पे आके कहेंगे कि यस, लाला रुख के मतलब उनको सिर्फ एक क्लिक करना होता है, एंड इट शोज यू नंबर ऑफ एंडोर्समेंट कि उनके स्किल्स अच्छे हैं। तो जो मेरे फ्यूचर के रिक्रूटर होगा, दे विल सी कि ओके, इसको अच्छे अच्छे लोगों ने एंडोर्स किया हुआ है इसके स्किल्स को, यानी कि ये वाकई में सही होगा। मैंने एक हैंड रेज होते हुए देखा, बट next on is your volunteer opportunities. Okay, so like this is now your opportunity to represent your personality कि आप या फिर एज अ पर्सन आप किन कॉजेस के लिए जो है आपकी पर्सनालिटी है। फॉर एग्जाम्पल, या फिर आप स्टूडेंट बॉडी में है, स्टूडेंट चैप्टर में कोई रोल है आपका, या फिर कोई ब्लड डोनेशन कैंप में आपका कोई रोल था, बिग इवेंट में आपका कोई रोल था। यू कैन पुट ऑल डिटेल्स है। एंड अगेन, क्योंकि यहाँ पे आपका डेटा नहीं जा रहा, आपके नंबर ऑफ पेजेस नहीं बढ़ रहे, तो जितना आप उसका डिस्क्रिप्शन डालेंगे, इट शुड नॉट बी टू लॉन्ग मेरे प्रोफाइल की तरह, लेकिन इट शुड बी लाइक, फॉर एग्जांपल, एक वॉलंटियर एक्सपीरियंस लिखने के लिए 3 से 4 लाइनें बहुत ज्यादा हैं। सामने उसका लोगो आ जाता है, सामने उसकी डेट्स आ जाती है, सो इट गिव्स अ कंप्लीट रिफ्लेक्शन आपके प्रोफाइल का कि आप किस तरीके से काम करते हैं और किन चीज़ों में आप इंटरेस्टेड हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये लगाया हुआ है कि आई एम स्टूडेंट असिस्टेंट फॉर फातिमा फाउंडेशन एंड आई हेल्प देम। ओके, मेरा बहुत बुरा लिखा हुआ है अरेंजिंग ब्लड डोनेशन कैंप, दैट्स नॉट सफिशिएंट, लेकिन मे बी आई एम नॉट लुक्ड एट इट सिंस इयर्स, तो इसको चेंज करने की जरूरत है। एंड देन स्टूडेंट असिस्टेंट विद पाकिस्तान यूथ फोरम, और फिर उसके मैंने डिस्क्रिप्शन देना। ठीक है, तो लाइक दिस शुड बी बेटर देन माय, दीज आर द राइट एग्जांपल्स। So one bonus
in what LinkedIn gives you. Like if you notice कि हम जो शुरू से प्रोफाइल अपना बनाते जा रहे हैं, हम बकायदा एक टाइप ऑफ सीवी या फिर हम किसी जॉब एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हैं, हम एक उस किस्म का अपना प्रोफाइल टाइप बना रहे हैं. ओके, वन थिंग आई मिस्ड इज द एजुकेशन वाला पार्ट. वो भी सिमिलरली जिस तरीके से आपने हमने एक्सपीरियंस के ऊपर डिस्कस किया, जॉब्स के ऊपर, सिमिलरली हम अपनी एजुकेशन वाले उसमें डाल सकते हैं. एंड देन यू हैव टू, आई रियली रिकमेंड राइटिंग डिटेल्स अबाउट योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स, या फिर आपने जो सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स किए होंगे, शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स किए होंगे, दैट एज वेल. उसके साथ अपनी यूनिवर्सिटी का सही नाम लगा के टैग करना है कि आपकी यूनिवर्सिटी का लोगो आ जाए, सो दैट लोग जाके देख सकें, बजाय इसके कि आप मेहरान यूनिवर्सिटी का फॉर एग्जाम्पल पूरा नाम बार बार लिख रहे हैं, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी का नाम है. आपको बस लोगो होगा तो वो नजर आएगा. सो दिस बोनस अपॉर्चुनिटी इज कि आप लोगों से रिकमेंडेशन भी मांग सकते हैं ऑन लिंक्डइन. फॉर एग्जाम्पल मैंने ये मेरे पुराने टीचर्स से या फिर जो लोगों के साथ मैंने काम किया है उनसे अपना जो है रिकमेंडेशन मांगा हुआ है. एंड अगेन आई रिक्वेस्टेड देम कि प्लीज कीप इट शॉर्ट, क्योंकि इफ इट्स टू लॉन्ग तो वो सी मोर वाला सीन हो जाता है, एंड देन द रीडर हैज टू गो मोर. एंड आई नो किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि मेरा प्रोफाइल पूरा जाके देखेगा. तो उन्होंने छोटे छोटे से बता दिया कि किस तरीके से दे हैड द लाइक दे लाइक्ड वर्किंग विद मी और नॉट. Okay, so there's going to be quiz time. There's just one question. I'll ask you one question. जो 3 लोग सबसे पहले सही जवाब देंगे मेरे सवाल का, they will get a prize. Lala, there is question. Okay. Can you please guide where to insert professional affiliation and professional bodies like IEEE, IEEEP, PC, etc.? शफकत, आई थिंक तो नीचे एक होता है सेक्शन फॉर द एफिलिएशंस. ठीक है, जिस आई चेक फर्दर इसको इसके बाद कि एग्जैक्टली कहाँ पे, लेकिन वो सबसे बॉटम में कॉजेज से ऊपर एक सेक्शन होता है कि व्हाट लाइसेंसेस और सर्टिफिकेट्स के साथ. एंड वन मोर थिंग कि आपको इस वक्त जो जो सेक्शन शो होते हैं ना अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे के अलावा भी, there's one section in the LinkedIn जिसमें जाके you can add more sections and even remove sections. For example, आपको education section remove करना है अपने LinkedIn से, which is a very bad example. तो आप even जाके education वाला हटा भी सकते हैं. So try to go to that section कि जहाँ से आप और मजीद sections add कर सकते हैं. तो वहां पे आपको जो है प्रोफेशनल बॉडीज ऐड करने वाला सेक्शन मिल जाएगा. ओके, थैंक यू शफकत. ओके, शफकत इज आस्किंग कि प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस वगैरह की भी एक अलग सा सेक्शन होता है, दैट अगेन फॉर एग्जांपल मेरे केस में मैंने लास्ट ईयर एक सर्टिफिकेशन की थी जो कि क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड थी. एंड या फिर आप IEEE या फिर आप कोई भी सर्टिफिकेशन कर रहे हैं तो यू कैन ऐड दैट सर्टिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पर आपका जो हेल्थ एंड सेफ्टी का सर्टिफिकेशन होता है, दैट्स वेरी सिंपल एग्जांपल. उससे ये होगा कि रिक्रूटर को व्हेन दे लुक एट योर प्रोफाइल उनको ये पता चल जाएगा कि आप एक सर्टिफाइड इदारे से आपके पास ये लाइसेंस है, या इवन आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं. डेवलप्ड कंट्रीज में there's requirement like in eligibility criteria they want the driving license, क्योंकि जॉब की नेचर इस तरीके से होती है. well तो आप लिंक्डइन के अंदर वो भी अलग सेक्शन. so these were जो सेक्शंस हमने डिस्कस किए, these were really basic. like जब आप एक बेसिक प्रोफाइल बनाने शुरू करेंगे, and then there are so much more opportunities. For example, writing articles, publishing your, creating events, even hiring people. This is an amazing tool. Questions. पहले शफकत, I used to write those in certifications and licenses previously. जब मैंने मतलब बहुत पहले ग्रेजुएशन के दौरान जो है अपना प्रोफाइल बनाया था, लेकिन अभी मुझे रियलाइज हुआ था वेरी रिसेंटली कि दे लाइक कोर्सेरा के कोर्सेज डू नॉट बिलोंग देयर. कोर्सेरा के कोर्सेज बिलोंग इन द कोर्सेज सेक्शन. और आप ये कर सकते हो कि एजुकेशन सेक्शन के अंदर आप जो है ना एक नया कोर्सेरा का लिंक बना दें. ठीक है, उसमें आप फॉर एग्जांपल जब से आपने स्टार्ट किया है
मोस्ट प्रॉब्ली कोविड के टाइम से किया होगा, तो 2019 टू 2024, और उसके अंदर आप अपने 12-13 कोर्सेज लगते, क्योंकि कोर्सेरा के ये होता है यहाँ पर एडिक्स या फिर इनका ये होता है हमारे बहुत ज्यादा कोर्सेज हो जाते हैं, और अगर उसका हर एक का अलग लिंक होता है तो इट बिकम्स टू मच, जो कि मेरे साथ हुआ था जब मैंने इसको लाइसेंसेस वाले सेक्शन में लगाया था। और जब मैंने कोर्सेरा को लाइसेंसेस के साथ लगाया था ना, तो मेरे जो इम्पोर्टेंट वाले लाइसेंसेस थे, जो कि मैंने मतलब व्हेन आई से इम्पोर्टेंट इट मीन्स वो पेड और हार्ड वर्क के बाद मुझे मिले थे लाइसेंसेस। तो जब कोर्सेरा और लाइसेंसेस एक जगह पे थे तो मैं खुद उनकी इम्पोर्टेंस को जज नहीं कर पा रही थी, तो इसीलिए मैंने खुद अपने लिए ये जरूरी समझा था कि मैं कोर्सेज को वहां से हटा के और किसी दूसरी जगह पे रखूं। So I would recommend the same for you. What Now there. ideas? Um, शफकत, आई वुड रिकमेंड कि आपकी समरी इतनी होनी चाहिए कि उसको सी मोर वाला ऑप्शन नहीं आए, जितनी भी हो वो, मतलब आप अपने प्रोफाइल को एज अ क्या होता है, एज अ व्यूअर देखने की कोशिश करें, या फिर किसी और के फोन पे या कंप्यूटर पे देखें, तो सी मोर वाला नहीं आना चाहिए, यानी कि एक्स्ट्रा स्पेसेस ना लगाएं और उसको थोड़ा सा मतलब इस तरीके से डिजाइन करें कि सी मोर वाली नौबत ना आए, बाकी नंबर ऑफ वर्ड्स जितने भी बनते हैं। प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स आई वुड से कि अगर वो मतलब हाईली क्रेडिबल है और मतलब आपने ऑफ कोर्स उसमें टाइम एनर्जी एंड मनी लगाया हुआ है, तो and like when they are seriously professional or technical I would say rather, तो आप उनको लाइसेंसेस में लगाएं, बट इफ दे आर लाइक फन प्लस टेक्निकल, तो भले आप उसको कहीं और पे फिट कर सकते हैं। Thank you, Shafqat, for your questions. It's bringing much more things. Okay, quiz time. जो लोग जो 3 लोग सबसे पहले और सही जवाब देंगे, there is a prize related. There's a prize, or there's a prize related to LinkedIn, in fact, and which would be given after this session. So everybody ready? I'll put the next question, the question after this slide. And you will have like, I mean, there's no time जो लोग सबसे पहले chat के अंदर इसका जवाब देंगे, um, and the your answer should be sent to everyone, not just panelists, ताकि फिर उसमें हम fair रह सकें. So the next slide is the question. 3, 2, 1. You are dash times more likely to be viewed if you have a professional photo. Hmm. I get this. Yeah. Okay, we have one winner. There are two. They have replied, but I guess Okay, there are one two of them. replies. There are two replies. Sorry, I only saw one. No, there are two. There are two replies. Three replies. Hmm. Can participants? Okay. Sorry, मैंने शायद chat का feature अभी on किया है. So we're waiting. Okay, we have. Okay, we still have But, three replies. oh, yeah. Yes. No, Hmm. मैंने अपने टॉक के दौरान ही एक नंबर बताया था कि you are dash times more likely to be viewed if you have a professional photo. So we'll keep it open for like one more minute and then we'll close. Hmm.
Oh, Okay, time's up. And there is just one winner जो कि मैंने गलती से पहले कह भी दिया था, but nobody paid attention. okay. मालिक अब्दुल हक, आपका जवाब सही है. We are 14. जबीन आप म्यूट कर दें शायद. Okay, you're 14 times more likely to कि लोग आपका प्रोफाइल देखें if you have a good professional photo. And the prize is जो कि मैंने 3 लोगों के लिए रखा था, but we have just one winner, and that is Now, LinkedIn. person are replying 14, 14. Okay, so the price is LinkedIn Premium for 2 months trial. So जो winner है Malik Abdul Haq. I'm putting the email address in chat. Please send an email or like a LinkedIn message to us. मैं आपका नाम भी नोट कर रही हूँ. And remind us, please send you the voucher uh, for the LinkedIn Premium for 2 months. Thank you. We have one more question. I have recently completed policy fellowship. It need to be written in education or experience. Experience, of course, because it's a fellowship. आपने काम किया था. Anyways, good question. Well, Well, I have 2 more referrals. Let's see who stays until end and like continue asking for good questions. Maybe. So okay. like मेरे पास 3 हैं, 2 मजीद हैं. We'll see. Let's continue with the session. Okay. ओके, सो ये हो गया. हम अपनी इमेजिनरी हमने अपना एक प्रोफाइल बना दिया जिसके अंदर शफकत ने हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे एंड मे बी दे विन अ प्राइज फॉर दिस. कि हमारे हम लाइसेंस सर्टिफिकेशन भी ऐड कर सकते हैं, कोर्सेरा के कोर्सेज भी लगा सकते हैं, और और भी बहुत सारी चीजें हैं व्हेन यू कैन ऐड ऑन सेक्शंस. तो इमेजिन कि अब आपका एक अच्छा और कंप्लीट प्रोफाइल बन गया है जो कि हमने एट द बिगिनिंग डिस्कस किया था. अब और क्या फीचर्स हैं लिंक्डइन के. there's this find and join groups. जिस तरीके सिमिलरली जिस तरीके से फेसबुक पे ग्रुप्स होते हैं, यहाँ पे भी ग्रुप्स होते हैं. ऑन योर लेफ्ट यू कैन सी कि ये मेरे ग्रुप्स हैं. अब इन ग्रुप्स को देख के भी 2 चीजें हैं. एक तो सामने वाले बंदे को मेरे इंटरेस्ट का पता चलेगा कि व्हाट ग्रुप्स आई एम इनटू, और दूसरा ये मुझे, मैं क्योंकि इन ग्रुप्स में हूँ, तो इन ग्रुप्स की जो भी एक्टिविटीज होती हैं, इन ग्रुप्स से रिलेटेड इनमें जो भी इंफॉर्मेशन और एक्टिविटीज या फिर अपॉर्चुनिटीज आ रही होती हैं, सो एज बीइंग पार्ट ऑफ दीज ग्रुप्स मुझे सबसे पहले उन अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चलता है. क्योंकि अनलेस यू आर नॉट एक्टिव, यू आर नॉट पार्ट ऑफ दीज ग्रुप्स, आपको चीजों का शायद नहीं भी पता चलता. अपॉर्चुनिटीज आती हैं ग्लोबली, कभी कभी खाली भी चली जाती हैं, लाइक एटलीस्ट पाकिस्तान से लोग नहीं अप्लाई कर रहे होते. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि यू आर इन्वॉल्व into right people, you're connected with the right people and you're involved into right groups. For example, like by now you should know कि मैं एक engineer हूँ और अभी मेरा interest level buildings और climate change और इन चीजों से related है. तो like on your left you see कि मैं women, female science talents, US Pakistan women and energy scholars, American Association for Advancement of Science, Climate Change, ARBI जो कि building energy related group है, linking construction, so on, so on. So these give me first-hand information कि what's happening in my field, in my area, and these really help me get connected to the opportunities as well. That's how we get to discover the content relevant to us. So hashtag is another opportunity. For example, ये मेरे followed hashtags हैं. Plastic, World Green Building Energy Week, Youth for Climate, I Foresee, Innovate for Climate, Racing with Purpose, Ocean Rights, Jobs in Pakistan. ये सबसे नीचे है शायद क्योंकि ये पुराना followed hashtag होगा. So these are my followed hashtags जिनसे मुझे इससे related, यानी कि ये वाला hashtag जब भी यूज होगा जॉब्स इन पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान ओशन राइट्स, तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मेरे वॉल पे जरूर आएगी. So this is another way कि जिस तरीके से वो आपको कनेक्ट करें. Okay, finding a relevant job could be very difficult. Even finding a job it could be very difficult. Relevant तो बहुत दूर की बात है. लेकिन LinkedIn just helps you make it easier. So
On LinkedIn there's this one section जो कि हम आप ऊपर section पे देख रहे हैं jobs, and then it even gives you job seeker guidance कि आपका CV improved है या फिर नहीं है, and then it okay, so for example मैं अपना job section जब खोलती हूँ it instantly gives me with or without premium जो भी अभी बात चल रही है वो विदाउट प्रीमियम की बात चल रही है, एक्सेप्ट लिंक्डइन लर्निंग वाला पार्ट दैट कम्स विद, वो भी प्रीमियम से नहीं आता, लिंक्डइन लर्निंग कम्स विथ योर यूनिवर्सिटी, क्योंकि मेरी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन होती है तो मेरे पास लिंक्डइन लर्निंग का आ जाता है, तो लाइक वो आपको अपनी यूनिवर्सिटी के साथ चेक करना पड़ेगा। सो मैं जब जॉब्स वाला सेक्शन खोलती हूँ तो इट गिव्स मी टॉप पिक्स फॉर मी, ओके, क्योंकि अब लिंक्डइन के एल्गोरिथम को पता है कि मैं क्या करती हूँ, मेरे क्या एक्सपीरियंसेस हैं, मेरे क्या इंटरेस्ट लेवल हैं, मेरी क्या एजुकेशन है, मेरी क्या लाइसेंसेस हैं, एंड देन मैं किस किस्म की जॉब फ्यूचर में ढूंढना चाहती हूँ। तो इट इंस्टेंटली गिव्स मी टॉप जॉब पिक्स फॉर यू, energy analyst, which is like, of course, I will be looking for that kind of job, or then sustainability project manager and so on. और ये जो आप आपको कर्सर मैनेजमेंट कर्सर नजर आ रहा है? जी जी। ओके ये जो आप देख रहे हैं इजी अप्लाई का सेक्शन ऑन द लिंक्डइन, it's heaven. It's like the biggest, easiest thing in your life while hunting for jobs. So you click it, this easy apply, and you do one, two more clicks, you reply to one, two, three answers, and voila, you have applied for the job. So that's क्योंकि अब देखें प्रोफाइल बनाने की जो मेहनत थी वो आपको एक बार करनी है, बिकॉज इफ यू आर एस्टेब्लिश्ड रिसर्चर और वॉट एवर, यानी कि ऑफकोर्स जब आपकी ग्रोथ हो रही है तब तो हर कोर्स के साथ हर डिग्री के साथ आपको अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है, लेकिन वंस यू आर एस्टेब्लिश्ड पर्सन आपको प्रोफाइल बनाने की मेहनत सिर्फ एक बार करनी है, ठीक है? फिर जॉब ढूंढना इज लाइक अ पीस ऑफ केक, इजी अप्लाई तो इट्स नॉट अ हार्ड वर्क, जहाँ पे इजी अप्लाई का सेक्शन नहीं है तो एटलीस्ट इट वुड ब्रिंग यू टू द लिंक जहाँ पे आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, दैट्स हार्ड वर्क। लेकिन यहाँ पे आपने प्रोफाइल बना दिया वो काम, और उसको आपने अपने प्रोफाइल को आप जो है बेस्ड ऑन द कीवर्ड्स और एसईओ बेसिस पे आप उसको यू कैन कीप ऑन चेंजिंग एंड अपडेटिंग इट, ओके। मैं जॉब्स वाले सेक्शन में गई तो मुझे पहले इसने टॉप जॉब्स पिक्स फॉर मी दिखाया, बट देन आई राइट कि क्योंकि अब ये तो चलो मुझे फॉर एग्जांपल डबलिन में जॉब दिखा रहे हैं क्योंकि बेस्ड ऑन माय करंट लोकेशन, लेकिन मैंने इसमें डाला कि मुझे कराची की जॉब चाहिए, ठीक है, आई एम लुकिंग फॉर जॉब्स इन कराची। तो नाउ यू कैन सी द लिस्ट ऑफ फिल्टर्स हियर कि मैं मुझे इजी अप्लाई वाला ऑप्शन ऑफ करना है ऑन, ओके, दिस इज द इजी अप्लाई आई वाज टॉकिंग अबाउट। डेट पोस्टेड कब होनी चाहिए, एक्सपीरियंस लेवल मुझे मतलब मिड इंटरमीडिएट या फिर सीनियर लेवल की जॉब ढूंढ रही हूँ मैं, जॉब्स होनी चाहिए या फिर इंटर्नशिप, आप ये सारी चीजें फिल्टर कर सकते हैं, एंड देन आपको ये जॉब्स इन कराची दिखाएगा, एंड देन इवन यू कैन सेट अलर्ट्स फॉर द जॉब्स कि जब भी इस जो मेरा ये मैंने फिल्टर के लगाए हुए हैं इन फिल्टर्स के ऊपर कोई भी नई जॉब आती है तो मुझे फौरन से ईमेल आ जाएगी, एंड देन ओके आई मैंने ये रिसर्चर वाली जॉब खोली फॉर एग्जांपल, एंड आई वुड रीड द डिटेल्स और आई वुड सी कि ये कौन सा बंदा, फॉर एग्जांपल ये जो रिसर्चर वाली जॉब है ये मुफ्ती मोहम्मद जमान जो है हायर कर, सबसे पहला काम तो ये करना है कि इस बंदे के साथ कनेक्ट हो जाना है, इसके साथ कनेक्ट होने से ये फायदा होगा कि वो जो बंदा है वो आपकी प्रोफाइल देख सकेगा, एंड लाइक यू हैव मच मोर चांसेस टू हियर बैक if they at least see your profile and your profile is complete and strong, of course. So this is amazing feature. I used to use this feature to look for the job when I was looking for the jobs, and it really helped me a lot. Um, Finally, so LinkedIn, because it's because there are so many important people on LinkedIn जो कि LinkedIn के ऊपर अपने insights, अपने experiences और अपने thoughts share करते हैं. So if you're working on your profile or in the right direction for the professional growth and so on, there's no better place than LinkedIn. In fact, जहाँ से मैं बैठ के बात कर रही हूँ, whenever you apply for a job, even with or without LinkedIn, the first thing that recruiter does is they go to your LinkedIn and see. और अगर आपको प्रोफाइल पर सबसे पहले तो पाकिस्तानी प्रोफाइल्स मोस्टली when you are at the university level students के they are incomplete.
So incomplete profile is like a very uh, bad reflection, not just of yourself, but like मैं हमेशा ही अगर इनकम्प्लीट प्रोफाइल्स देखूंगी किसी एक ग्रुप के, तो मेरा पूरे ग्रुप के ऊपर बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है। सो इनकम्प्लीट प्रोफाइल, उसके अलावा बैड प्रोफाइल्स, यानी कि आपने उसमें लिंक्डइन के ऊपर भी अगेन आपने पॉलिटिकल व्यूज डाले हुए हैं, रिलीजियस व्यूज डाले हुए हैं। LinkedIn is not the place to share all that. It's for the career growth, professional sort of stuff. अगर आपको अपने views share कर सकते हैं, there are there's TikTok for that, there's Instagram for that. So like avoid making a bad profile, क्योंकि जो भी आप आज post करेंगे, even like LinkedIn के ऊपर जो आप like भी करते हैं, it goes notification to the entire connection कि लाला रुख liked this. तो ओके, और मैं हमेशा लिंक्डइन पे कुछ लाइक करने से पहले, बिकॉज आई डिडंट नो बिफोर कि मेरे जो लाइक का अलर्ट है वो भी दूसरों लोगों के पास जाता है, तो अब तो लाइक लाइक करने से पहले भी सोचना पड़ता है। लाइक अगेन फेसबुक की तरह देयर आप लाइक कर सकते हो सैड इमोजी या फिर जो भी है, तो उस पर रिएक्ट करने से पहले भी मुझे 100 बार सोचना पड़ता है कि इस मेरे रिएक्शन का अलर्ट जाएगा थ्रू आउट माई कनेक्शन। लाइक मैं काफी लोगों को, आई वुडंट वांट कि हर कोई बंदा बैठ के इसको देखे, तो आई जस्ट बी केयरफुल। Like there is one, आई थिंक मेडिपिन, लेट्स फिनिश एक दो स्लाइड्स एंड देन वी गेट बैक there टू is one question and a Q&A. um how we know, ma'am, how we find if there's any feedback from recruiter. um Recruiters do not always generally give you feedback on LinkedIn, but um, like you can ask them always. For example, I'm recruiting for Climate Action Pakistan, तो मैंने भी for example एक journalized email डाली हुई है for all those rejections, like wherever I have my reasons for rejection, लेकिन of course recruiter के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है to give the explanation or feedback to everyone. I don't think that would work. लेकिन आई नो कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि बहुत डिटेल्ड फीडबैक देती हैं ऑन रिजेक्शन। फॉर एग्जांपल मैं अप्लाई करती हूँ आईरीना की जॉब्स के लिए, और मैंने कोई 10-15 बार जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, एंड लाइक वंस अपॉन अ टाइम आई गॉट, एंड दैट वाज आल्सो थ्रू लिंक्डइन, एंड उन्होंने मुझे एक बार जो है बहुत पर्सनलाइज्ड और बहुत डिटेल्ड फीडबैक भेजा था, बट दैट वाज जस्ट आईरीना। आई डोंट थिंक कि हर ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से करती है, एंड ट्रस्ट मी दैट फीडबैक हेल्प्ड मी अ लॉट, क्योंकि उन्होंने मेरे ईमेल तो ऑफकोर्स आप शो ऐसे ही करते हैं कि वी लाइक योर प्रोफाइल, बट के बाद सारा किस्सा होता है, लेकिन दैट फीडबैक मैं कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि उन्होंने बहुत इम्फेसिस डाला हुआ था कि आपका प्रोफाइल बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन बट के बाद से किस्सा थोड़ा ज्यादा लंबा था। बट आई saw that they were generally okay। बात को छोटा करेंगे, अगर आपको फीडबैक चाहिए अपने प्रोफाइल के ऊपर, तो यू कैन आस्क योर सीनियर या फिर योर मेंटर्स और एनीवन कि एटलीस्ट आपको प्रोफाइल के ऊपर फीडबैक दे सकते हैं। One more question. Okay. Malik Abdul Haq, please send me a message on the LinkedIn or put an email on this, um, or I'll try to give this email as well. मैं भी प्लीज ईमेल नोट कर दीजिएगा। जी। Okay. Sharing updates versus publishing posts. Okay. So, like, you can share updates on LinkedIn कि आप अपने articles, अपने images, अपनी post, अपने interests. For example, I went to COP28. It was an update, and it was a post that was really important. तो उसको मैंने जरूरी समझा के pictures के साथ में, because it helps my community know कि मैं किस किस्म की चीजों में और किस events पे मैं attendance मेरी होती है। So finally, a story is something like you wind out of yourself like a spider. Like a spider, it is web that you weave, and you love your story like a child. आज जब 2024 में बैठ के मैं अपनी पूरी कहानी किसी को बताती हूँ, ओके, सो लाइक व्हेनेवर, अब अगर मुझसे कोई इंटरव्यू पूछेगा ना कि ओके टेल अस अबाउट योरसेल्फ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज लाइक रोल माय स्लीव्स, ओके, अब मैं आपको अपनी कहानी बताती हूँ। तो किस्सा कुछ ऐसे था कि मैंने ये इंजीनियरिंग की, फिर ये हुआ, फिर ये, बिकॉज अब मेरी कहानी में कंटेंट बहुत ज्यादा है,
कंटेंट में मिर्च मसाले बहुत ज्यादा हैं और कंटेंट को बताने का तरीका भी आ गया है, ठीक है। सो लाइक आप खुद को भी इमेजिन करें कि फॉर एग्जाम्पल महानूर इज अ रिसेंट ग्रेजुएट, ठीक है। तो मे बी यू डोंट हैव अ लॉन्गर स्टोरी इस वक्त, लेकिन आप अभी ये इमेजिन करो कि मेरी तरह आप 10 सालों के बाद अपनी कहानी किसी को जब बता रहे होंगे, तो वो कहानी कैसी होनी चाहिए? लाइक यू वांट एन ऑर्डिनरी कहानी कि मैं एक लड़की थी, इंजीनियरिंग किया एंड लाइक आई स्टार्टेड वर्किंग at ABC Disco, or you want some rich masala in your kahani. You want to do more fellowships. You want to do international trips. You want what? तो मैंने मे बी आई नेवर थॉट कि मैं अपनी कहानी के ऊपर काम कर रही हूँ, लेकिन आप इस वक्त जो भी कर रहे हैं, जस्ट इमेजिन कि आप अपनी कहानी लिख रहे हैं और किस तरीके से आप अपनी कहानी लिखना चाहते हैं, वो आपके हाथों में है. So let's keep sharing our stories. So that was all about the LinkedIn. There's just one more announcement that I would make, and then I'll Now close there it, is one more question. and then we'll get back to questions. और किसी तरीके से हमें दो LinkedIn premiums भी देने हैं. And there's just one announcement कि in Climate Action Pakistan, collaboration with MAS, we have this summer internship open. So it was open earlier on LinkedIn, but as an benefit of attending this session, you could apply for the summer internship. If you think you're not suitable for the internship, please tell your students to apply for this. तरीका ये है कि you have to make 1 minute video that why do you want to do this summer internship, and send it at this email address, clientxpark@gmail.com, by 14th of March. The video should no longer be 60 seconds, or we prefer that it's a YouTube video. It's okay. I'm really looking for students या फिर जो लोग on ground जो है हमारे लिए थोड़ा सा काम कर सके. दिस इज एन अनपेड अपॉर्चुनिटी, लेकिन आपका जो खर्चा होगा फॉर द इंटर्नशिप, फॉर एग्जाम्पल इफ यू डूइंग समथिंग फॉर अस, दैट विल बी reimbursed of course, and it's a 2 month summer internship. So send me more questions and everything about this internship at this email address, or send your video or your examples of graphic designing or whatever. I will not take questions about the internship here. I will take all the questions about the session now. There are two more questions, Lala. How to gain top voice badge at LinkedIn? Any tips? Final question: what needs to be written in the main heading, especially what should include in it? शिवकत, मेन हेडिंग्स का तो आप खुद डिसाइड करेंगे, बिकॉज you know yourself better than anyone else, and like you should know कि आप अपना कौन सा वाला साइड दुनिया को दिखाना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल ओके, सो फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में आई हैव, मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा डिफरेंट है, अभी मैं जो कर रही हूँ डिफरेंट है, मेरा क्लाइमेट कम्युनिकेशन का थोड़ा सा डिफरेंट है. सो आई वुड डिसाइड कि मैं कौन सा वाला पार्ट दुनिया को हेडलाइन में दिखाना चाहती हूँ, एंड आई विल ट्राई टू curate it balance in a balanced way. I'm not the best person to help you with this. This is something आपको खुद करना पड़ेगा. Journal idea is कि what kind of things you're looking for in future. For example, मैं fellowships ढूंढ रही हूँ जो कि paid summer fellowships हों, जो कि मैं as a student स्टेटस के ऊपर कर भी सकूं. तो मैं वो चीज लिखूंगी जिन चीजों की मुझे तलाश है या जिन लोगों के साथ में कनेक्ट होना चाहती हूँ. सो व्हाट्स योर विजन, व्हाट्स योर गोल. आपको जो पहला सवाल है यहाँ पे स्क्रीन पे, हाउ टू गेन टॉप वॉइस पेज एट लिंक्डइन, फॉर दैट आई वुड रिकमेंड कि आप जो है 1 month ट्रायल जो होता है लिंक्डइन का फ्री वाला, या फिर आई कैन हेल्प यू विद द 2 months वाला ट्रायल एज वेल. आप एक बार वो प्रीमियम ले लें, बिकॉज लाइक यू नो माई एक्सपीरियंस ऑफ having a LinkedIn premium is that when you have premium, you get more badges, you get more opportunities to reply and engage in the articles and so on. So get the premium for once, and then okay. Miss Mehjabeen ने एक Google sheet डाली हुई है in the chat for attendance. I think that's for the maybe E-certificates and okay, attendance. yeah, for certificate of attendance. So please. So they are all requested to fill that as soon as possible. Okay, there is another question, I guess.
Ma'am, kindly tell me what is the benefits of post impressions? I recently get 6K impressions. How it helps me? So impressions helps you get visibility towards more people. Uh, yeah. Um, Shipkat, you can also send an email to clamitpath@gmail.com for the premium one. And please do it today, both Malik and Shipkat. Abdul Haq. Malik, Abdul Haq, and Shukrat. And please fill this Google Sheet if you want the participation certificate. We'll be open for 2 more minutes if anybody has any questions. And then we'll close. All right, thank you so much, everyone, for attending. And if you have any more questions,